Hello, good evening and welcome to Breaking Views on NDTV. This broadcast comes to you live right now from the Sultanpuri area of the national capital. Why I'm standing here, this is the place, in fact, where, ladies and gentlemen, one very important clue on this case, which on the intervening night of 31st and 1st, a girl was dragged and she was killed. One of the very key piece of information who will help solving this case is going to be the friend of that girl, who in fact is at this moment, as you can see, is there. Now a lot of media hype here, a lot of people who have come here to try and speak to this girl. We'll also try and do that, but at this moment when you see a lot of people all across and a lot of onlookers as well, it becomes difficult to in fact have any meaningful conversation, because there are key questions that Nidhi, who is the friend of this girl, will have to answer. Why is it that on the night when the accident took place, and as per the police, she was present at the very spot, how is it that she left her friend and fled the spot without informing the police or any other, the relatives or the friends of the girl Anjali? Now, very, very important what she's saying. Let's just listen in first to what she said just a short while back. We'll also try and have a conversation with her later. ब्रेक दे के गाड़ी रुकवाई, गाड़ी रुकवाने के बाद फिर हम गए आगे जाने के बाद हमने क्या करा, वो गाड़ी आ रही थी ब्लैनो कलर की, गाड़ी आ रही थी ब्राउन कलर की, ब्लैनो गाड़ी थी। उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी ब्लैनो है, तो गाड़ी लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। The police here having a very difficult time in trying to crowd control this situation, because a lot of people and onlookers have in fact come here. They want to in fact also see and that what is happening, because this case, ladies and gentlemen, has completely in a way shaken a lot of people. The brutality in which she was killed is something which has been spoken about, been written about continuously. What we see here, there are people, those who are trying to speak to her, and we'll also, but not in this melee which is taking place at this moment. But the fact is that two important visuals came out today. Number one, the CCTV footage which said that this friend Nidhi, who is right now at this location and is speaking to the media, she, along with Anjali, sat on a scooter, on that scooter on the fateful night, and they started going towards their house. It is then the accident took place, and you heard that woman. So this CCTV footage outside that hotel came out today, and it was only on 3rd of January, after the accident which took place in the early hours of 1st January, that one important character was introduced in this very complicated case of sorts. Nidhi is the name of that person. Now she's speaking to the media as we speak, but the fact is that there are some unanswered questions as well, and we'll get to that. But the other important, development as far as this case is concerned was the cremation of this girl. The postmortem today was completed yesterday. The body was handed over to the family in the afternoon, and then she was taken to the house where
the family says that she was the one who was instrumental in building that house. Now, after that, once all that happened, today the body was handed over to the family, and under massive police protection, huge police protection, the family, ladies and gentlemen, then cremated the girl. Now, these visuals on your screen are of that girl being cremated. Let me very quickly at this moment also go across to my colleague Vedant, who is joining us. He has been covering this story right from the morning. Vedant, the girl was finally cremated, laid to rest today. But the family, are they satisfied with the probe at this moment? Because no matter what happens, the glaring lapses of the Delhi police are very, very visible. Are they also now, the apprehensions that they had about sexual assault, has that now been settled? Well, absolutely, Ankit. In fact, we spoke to the members of Anjali's family through the day, and all of them saying that they are not even satisfied with the post-mortem report because they still fear that there was some sexual assault that might have taken place. So the post-mortem has very categorically ruled out the possibility of a sexual assault, saying that there were no internal injuries which were found on Anjali's, the victim's private parts. But the family, of course, saying that they want justice. Now, justice means, of course, compensation for them as well. Though the Chief Minister has announced a compensation of 10 lakh for the victim's family, they say that, it's a total loss for them because Anjali was the sole breadwinner of the family. I mean, she lost her father 8 years ago. She has an ailing mother who has to be on dialysis on a weekly basis. She has 2 younger brothers. All of them were entirely dependent on her. So, and she of course had a life ahead of her. So for them, it's an absolutely devastating loss. In fact, her grandmother also said that we want justice not only for Anjali but for many other girls who find themselves unsafe and who have to battle such kind of incidents on a daily basis. Now remember, the sheer brutality and the gruesome details of the incident that have emerged, that have really sent shockwaves. And in fact, that CCTV footage, of course, as you rightly mentioned, said that she was not alone and she was with her friend Nidhi. Now that is crucial for the Delhi police. They have recorded Nidhi's statement as well. The investigation is on. The accused are in police custody as we speak. They have of course confessed to drunken driving. In fact, they also said that they had polished off 2.5 bottles of alcohol on their way as well. So of course shocking details coming up, but of course for the 20-year-old she had a life ahead of her, her dreams shattered, and for her family, of course they are left bereaved, and their survival is going to be also something which is going to be difficult because she was the sole breadwinner of the family. Okay, so at this moment, once this cremation has also been done, thank you for joining us with all those details at this moment. But questions have continuously been asked of the Delhi police about the way, in fact, they conducted the investigation and their response time as well. As I told you, a lot of people have come here recording this, seeing people on camera, showing it live, and massive media milli as well. But in this milli, what exactly happened? Let's just try and piece that together for you one by one, what we know so far, because now a new character has come, that is this girl Nidhi, and apart from that, what the police investigation so far has showed. Now what we know is that Anjali and Nidhi were at a hotel in Rohini on the New Year's Eve where they were partying. Now around 1:40 a.m. Anjali and Nidhi are seen in the CCTV footage coming out of the hotel and walking and towards their scooter. And after that, they pick up their scooter and move forward. Now, the first, in fact, Nidhi is riding the scooter. That is what the Delhi police sources said. Later, they switch. Anjali comes on from the pillion side to, in fact, the riding position. And then later, she, in fact, meets the accident when they're stuck, in fact, hit by the car. Now, at around 2 a.m., this is the accident that took place. And at that moment, both these girls fell off the scooter. Now, while Nidhi
fell off the opposite side. Anjali, in fact, got stuck in the car. It was around 3:24 a.m. Calls were made to the police control room 22. According to the witness we spoke yesterday, the body is dragged around for 45 minutes and the body then falls off at the Jonti village in Kanjavla. Around 4:10 a.m. that morning, the police then recovers the body and a case is registered. Now, what is the eyewitness's version? Deepak, who we spoke yesterday, Deepak said he heard a huge noise, saw the body being dragged under the car, made several calls, 22 according to him, to the police and pointed PCR vans towards the car. He also gave the number of the car to the police. Meanwhile, the Delhi police said that they had to retrieve the number of the car from the CCTV footage. Later, also, ladies and gentlemen, Anjali, the friend you heard, Nidhi, she in fact spoke about the collision. And then, what are the accused saying? Let me very quickly just jump and tell you what have the accused said so far in their defense. As per the sources, the account to them, the accident took place between 2 and 2:30 a.m. Accident because scooty was swaying on the road. That's the allegation that the accused are making at this moment. The driver felt something stuck, but the rest said that, keep going. Mithun, one of the person who was sitting on the car, on the passenger seat, on the left side of the car, saw the hand while taking a U-turn. They stopped the car, seeing the hand. The body then dropped when the car stopped. They looked out and then fled after, being scared as far as this entire sequence of event goes. Now, the Delhi, there are too many conflicting things which are coming out. And one important thing is that there are certain unanswered questions as far as this case is concerned. Now, Nidhi, the girl, and I will show you once more, who is still, in fact, in that media melee, speaking to various channels, those who are continuously lining up and speaking to her. According to her version, Nidhi blames the occupants of the car, while the accused said that the scooty was swaying. How was the body dragged for 12 kilometers without any realization is a big question. How did the car travel 12 kilometers without any check post, any checking by the police? The eyewitnesses say that they gave the number of the vehicle to the car, while the police says that they had to retrieve the number from, in fact, the CCTV footage. And what about the huge deployment? Delhi police said that there is massive deployment on the roads as far as the Delhi police is concerned. But the fact also remains that this girl has been saying that she was there when the accident took place. Why is it that she did not inform the police or the family members of Anjali when she saw this accident taking place right in front of her eyes? These are very, very important questions, as far as this case goes. Before I get you a sense from the locals as well, I spoke a short while back to Chandrasekhar Azad, who is in fact the founder of the Bhim Army. The girl's family contacted him. He went and met the girl today. This is what he said that the girl's family told him. आप आज परिवार से मिले थे, उन्होंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी ऐसा बताया जा रहा है। कब चिट्ठी आपको मिली और क्या उसमें उन्होंने लिखा था, और आप मिलने गए थे, क्या बात हुई आपकी वहां पर? कल शाम मुझे जो है वो चिट्ठी मिली थी सोशल मीडिया के जरिए, और एक वीडियो जो है, जो पीड़िता की छोटी बहन है उनका, कि भाई यहाँ आए और हमें न्याय दिलाएं, और हमारे घर पहुंचे। तो मैं आज सुबह मैंने कल ही वो किया था ट्वीट करते कि मैं जाऊंगा। आज मैं उनके घर गया था मिलने, उनकी माँ से मिला, जो उनकी हालत बड़ी गंभीर है, और उनकी बहनों से, छोटे भाइयों से। वो उनके आंसू अभी सूखे नहीं है जी, वो परेशान है, क्योंकि उनके घर की इकलौती जो बेटी, जो बेटा बन के उस घर को चला रही थी, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। उनकी बहुत सारी शंकाएं हैं, क्योंकि वो बेटी जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो कोई भी लापरवाही भरा कदम नहीं उठा सकती है। वो अभी क्रिमिनेशन के लिए मेरी उनसे बात हुई, वो कहते थे जो जिस घर में अभी हम हैं, वो घर उस बच्ची ने अपनी मेहनत से एक ईंट जोड़ के बनाया, तो वो चाहते हैं उस बॉडी को वहां लाना, और वहां के बाद वाई ब्लॉक में जहां वो अब रहते हैं, वहां से उसका क्रिमिनेशन करने का वो विचार कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि उनकी आंखें जवाब दे रही हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। वो चाहते हैं कि इसमें उनको न्याय मिले,
मेरी काफी देर उनसे बात हुई और मैंने उनको समझाया, ढांढस बंधाया कि वो अकेले नहीं, सब लोग साथ हैं। जो एक आशंका जताई जा रही थी, जो परिवार बार बार ये कह रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, उसमें ये बात पता लगनी चाहिए कि क्या इस लड़की के साथ किसी तरीके की और कोई घटना तो नहीं हुई, कोई सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट पुलिस ने मना किया है, डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक्सीडेंट होने के कारण और घसीटे जाने के कारण उसकी मौत हुई है। क्या परिवार कम से कम अभी जो हो रहा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे संतुष्ट है? सर, आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने परिवार से बात की, जब तक मैंने परिवार से बात की तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, मैं भी इंतजार कर रहा था। मैंने भी स्टडी नहीं की। आपके द्वारा बताया गया कि पुलिस ऐसा कह रही। देखिए, पहली तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी एफसीएल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी। एफसीएल की रिपोर्ट आएगी, उसमें कंफर्मेशन होगी। दूसरा, हम चीजों को कई तरह देख सकते हैं। अभी कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल जो असॉल्टिंग वो नहीं है, लेकिन उसका प्रयास भी हो सकता है। तो उसके बाद जो बच्ची की हालत थी, जो मैंने सबने देखी, जिस तरह से शर्मिंदगी हमने महसूस की कि दिल्ली जो देश का दिल है, दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं, पूरी एम्बेसी है, सब कुछ है, यहाँ से इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करता है। उसी दिल्ली में जिस दिन पूरा भारत जो है नए साल का जश्न मना रहा था, एक बच्ची को 12-14 किलोमीटर घसीटा जाता है। उसकी देखिए, एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, पुलिस ने 304A में फटाफट मुकदमा दर्ज किया है। 304A हिट एंड रन का केस है, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जैसा आपने मुझे बताया, मैंने कुछ लोगों को और सुना कि एक्सीडेंट के बाद घसीटने से उसकी डेथ है। तो इंटेंशन जो थी वो हत्या की हुई, तो 302 इसमें जो ऐड होनी चाहिए, अभी जो है, जो नहीं की गई है, क्योंकि घटना एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुई है, डेथ हुई है उसको घसीटने से। और कितनी बुरी तरह घसीटा गया है, ये हीनियस क्राइम। कई सारी चीजें विवेचना का पार्ट है अभी कि वो लोग किसके संपर्क में थे, किससे बात कर रहे थे। 3 बार पीसीआर ने गाड़ी लेके क्यों नहीं रोकी, 22 बार कॉल होने के बाद पुलिस कहाँ थी। इन सारे पार्ट्स पे जो है ना, पुलिस का फेलियर है। इसलिए पुलिस, और जिस तरह से अभी एक चीज जो सबसे जरूरी जाननी चाहिए कि उस पीड़ित परिवार से बात नहीं कर पा रही है मीडिया भी। पुलिस ने, जैसे एक नया ट्रेंड बन गया है कि आरोपियों की जगह पुलिस जो है पीड़ित परिवार को कैद कर लेती है। छतों पे पुलिस लगाई गई है। मैं वहां गया था, वो बात करना चाहते हैं मीडिया से, वो जानना चाहते हैं क्या चल रहा है, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं, क्योंकि पुलिस वहां इस तरह से उनको कैद किया गया है कि वो अपनी बातें मीडिया से नहीं रख पा रही। ये उनका एक डर है कि जब इस तरह का माहौल है तो क्या उनको न्याय मिलेगा? नहीं, तो क्या आप कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने आपको बताया कि पुलिस उनको रोक रही है मीडिया से बात करने के लिए? नहीं, मीडिया जा ही नहीं सकती है वहां। मैं गया था, मैंने मीडिया के लोगों से भी बाहर बात की, मीडिया वहां से आगे जा ही नहीं पा रही। उनके घर से 200 मीटर पहले पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है और एक्सेस नहीं है कोई भी। चारों तरफ छतों पे पुलिस लगी हुई है। ये किस तरह का माहौल दिल्ली में बनाया गया है कि पीड़ित परिवार को हम लोग उम्मीद दें कि आपको हम लोग न्याय दिलाएंगे, आप विश्वास करो, उसकी जगह हमने उनको कैद कर दिया। ये बुरा है। जो आम आदमी पार्टी इस पे प्रदर्शन भी कर रही है, एलजी का इस्तीफा मांग रही है, दिल्ली बीजेपी कह रही है कि देखिए, अगर हमारा भी कोई व्यक्ति है तो दिल्ली पुलिस ने उसको तुरंत पकड़ भी लिया है, अगर हमारा भी कोई कार्यकर्ता है तो। इसमें जो दोनों पार्टियों के बीच में जो इस तरह की राजनीति हो रही है, क्या वो मुद्दे से कहीं ना कहीं अलग हो रही है, या आपको लगता है कि इस वक्त ये सवाल उठाने जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें कूदना जरूरी है? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं, निर्भया, फिर नागल का दिल्ली का, फिर हाथरस में, ये इसलिए कह रहा हूं कि वो किसी पार्टी का मेंबर हो और वो किसी को इस्तीफा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें एक ऐसा माहौल तो दिल्ली को देना पड़ेगा कि जहां, मैंने कहा कि एम्बेसियां हैं, दुनिया के पर्यटक आते हैं, देश की गरिमा का सवाल है। अगर इस तरह का डर फैल जाएगा तो कोई कैसे आएगा हमारे देश की राजधानी में। तो इस सब चीजों से हटके आज हमें बात करनी चाहिए कि उस परिवार को न्याय कैसे मिले और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। क्या हम लोग नया करें, दिल्ली पुलिस क्या नया करे कि सब चीज जगह पे पुलिस की नजर हो। बड़े वादे किए जाते हैं कि इतने कैमराज, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी घटना कवर नहीं हुई है जी, बहुत सारी चीजें, और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। तो मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी ये अपील करूंगा, या उनको मैं संदेश दूंगा कि इन सब चीजों से ऊपर उठ के आज उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अच्छा एक चीज और, न्याय दिलाने के सोचे तो सही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हर घटना में 2-3 घंटे पहुंच जाते हैं, और बीजेपी के नेता भी हर घटना में, देखिए गृह मंत्री यही है, प्राइम मिनिस्टर यही, सब लोग यही है, लेकिन अब तक उस परिवार के आंसू पहुंचने और उसको जो कैद बनी उससे आजाद कराने कोई नहीं पहुंचा है। क्या हम इतने जो है राजनीति के चक्कर में इतने निष्क्रिय हो गए कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं? ये जिम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर की कि वो जाएं, आरोप लगाने के बजाय उनके परिवार के बीच जाएं, उनके आंसू पूछे,
और उनका विश्वास मजबूत करें कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, यहाँ आपको न्याय मिलेगा। लेकिन वो करने के बजाय एक दूसरे से इस्तीफा खेल में, ये बुरा है और मैं इसके खिलाफ हूं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वो एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बने, निष्पक्ष जांच हो, तो परिवार को संतुष्ट किया जाए और हम सब लोग मिलकर न्याय के लिए लड़ें और हम लोग दबाव बनाएं केंद्र सरकार पे भी कि दिल्ली पुलिस को इतना हाईटेक करे कि यहाँ इस तरह की घटनाएं ना हो और एक विश्वास जो है बने जनता का दिल्ली पुलिस और देश में भी कि भाई दिल्ली में महिलाएं बेटियां सुरक्षित हैं। All right, so you heard, in fact, Chandrasekhar Azad, he met the family today, and they are still, in fact, asking some serious questions. I just want to show you around once again. This girl, in fact, Nidhi, who was with Anjali on the day when the accident took place, is being now escorted out by the police from this very location. And a lot of, in fact, media milli, as I've been saying here, to try and get a word out of her. She lives in this area. They've just, the police has managed to get an auto now, and they will be taking her to a different location after so many onlookers, so many people, those who have, in fact, come to see what is happening here. भाई साहब क्या फोटो खींच रहे हैं आप? जानते हैं आप इनको? यहाँ यहीं के रहने वाले हैं? कहीं बाहर से हैं आप? अच्छा, जानते नहीं हैं, सिर्फ यहाँ पे आके देखने आए हैं। आप लोग कोई रहता है यहाँ पे आसपास से, या आप रहते हैं यहाँ पे, घर के सामने ही रहते हो आप इनके? तो ये जो देखा आप लोगों ने कैसा ये हादसा हुआ, तो इनकी जो सहेली है, 2 दिन तक किसी को पता नहीं चला कि इनका यहाँ पर इनके साथ पता था। अच्छा, इसने मना करी है, तो ये जान के अनजान बन रही है। इन्होंने सब कह रहे हैं कि बताया क्यों नहीं, उस समय बताना चाहिए था, शायद वो लड़की बच जाती ना, ये इसे पता होगी। कहने का मतलब है कि इनको पता है सबको, लड़की को क्या क्या कहानी हुई है, इसलिए बता नहीं। So, a lot of people also very curiously asking the same questions, that why is it that this girl who knew a lot about this, if she was with them on the spot that very day, why was it that she did not, in fact, inform the police? And could there would have been any possibility of Anjali being safe? Because if you take a look at the post-mortem report, it very clearly tells you that she died of the injuries, the hemorrhage, the blunt force injury of the accident, and then, of course, later being dragged on the road because when she got stuck under that car. That friend of hers has been taken from here by the police, and we'll try and follow and see if we can get in a word with her without, in fact, getting stuck with the kind of, what was happening right now with a massive, in fact, presence of the media. A lot of onlookers, all these people, in fact, here waiting, wanting to see what has happened. आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, आप यहाँ के रहने वाले हो? तो ये जो घटना हुई है यहाँ पर, ये 2 दिन से बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची इनको आज लेने के लिए, लड़की को जो निधि है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने बेदखल कर रखी थी इस लड़की को। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। बेदखल मतलब घर से बेदखल कर रखा था इसको, निधि को? हाँ जी, परिवार वालों ने। अच्छा, तो अंजलि यहाँ पर आती थी क्या? यहाँ पे किसी ने तो इसको ये नहीं पता। बहुत दिन के बाद दिखाई दिए यहाँ पे, तो बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। आज ही दिखाई दी है, 6 साल बाद आज दिखाई दिए यहाँ पे। उससे पहले कम से कम 6 साल के बाद दिखाई दी है, वो भी टीवी पे दिखाई दी है। 6 साल के बाद इसके भाइयों ने बेदखल, निधि जो है 6 साल के बाद दिखाई। आपको लगता है कि अगर उस दिन ये उस समय की पुलिस को या किसी को बताती तो शायद उस लड़की की जान बच सकती थी? हो सकता है, इस बारे में हम नहीं कह सकते। देखो, ऐसा तो पता ही नहीं था कि ऐसा कर देगी काम ये। 6 साल पहले ही इनको बेदखल कर दिया गया था। Okay, so look, the neighbors, in fact, telling us that this is the place Nidhi's family lives here, and she usually is not living here for the last 6 months, 6 years. Now, there are, as I said, some unanswered questions. Why did she not inform the police? That's one. And the questions, as far as the police is concerned, there is another separate investigation going on the lapses of the Delhi police. We'll continue to get you the latest from the ground on this big story in the national capital. Stay tuned to NDTV. That's all the time that we have in this edition of Breaking News. News and updates continue after a short break.